time for Punjab Kings versus Royal Challengers Bangalore, and for some reason, people are calling it the Delhi Derby. Reason being, we have got Virat Kohli playing for the RCB side, and we have got Shikhar Dhawan playing for Punjab Kings side, and people are really excited about these two because इन लोगों ने जब भी एक दूसरे के आमने सामने खेला है तो एक फैक्टर हमेशा टॉप नॉच रहता है, एंड दैट इज द एंटरटेनमेंट, अ लॉट ऑफ रन्स एंड डेफिनेटली अग्रेशन एंड गुड कम्बैटरी. सो इस राइवलरी को लेकर के कह लीजिए या इस फ्रेनेमीज जो स्टफ है उसको लेकर कह लीजिए, पीपल आर रियली एक्साइटेड. आई विल स्टार्ट ऑफ विद हितेश टुडे. हितेश, इस नॉट सो दिल्ली बट दिल्ली डर्बी के बारे में आपका क्या कहना है? विराट कोहली वर्सेस शिखर धवन, हाउ एक्साइटेड आर यू टुडे? Am I audible with Hitesh? I think there is some problem of internet. Hitesh, am I audible to you? Hitesh, am I audible to you? हाँ, फिर से एक क्वेश्चन बोला राशि. Asking ki, since people are calling it the Delhi Derby because of Virat Kohli versus Shikhar Dhawan, how excited are you for this rivalry and these two coming together? जस्ट लाइक ऑल द फैंस, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मुकाबले को लेके, क्योंकि दोनों डेफिनेटली मतलब एक जहाँ शिखर धवन और दो दिल्ली के लड़के, मतलब शिखर धवन और विराट कोहली आमने सामने होंगे तो एक अलग ही मतलब कि रोमांच होगा इस मैच में, एग्रेशन होगा, क्योंकि दोनों ही मतलब कि जहाँ मतलब कि विराट कोहली अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं तो शिखर धवन उनके बिल्कुल ठीक उल्टे स्वभाव के हैं. वो एकदम कूल माइंडेड रहते हैं, ना कुछ ज़्यादा दिखाना ना ज़्यादा कुछ, बस गेम पे फोकस करना. तो ये उनका मेन ये मतलब दोनों का अपना खेलने का स्टाइल अलग है. दोनों टीमें काफ़ी इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं दोनों टीमों के साथ. पंजाब जीत के साथ शुरुआत की थी, फिर बीच में उन्हें हार मिला था, फिर आखिरी मैच में फिर उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए जीत हासिल की थी. वही बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में भी सेम रीजन वही है कि उन्होंने जो भी अभी तक जितने भी मुकाबले खेले हैं तो वहाँ उनके साथ दिक्कत ये रहा है कि वो अपने टॉप 3 पे निर्भर रहते हैं, मतलब फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल. तो वो मतलब आज भी शायद मतलब पंजाब का मैदान है जो विराट कोहली को रास आएगा, मतलब उन्होंने वहाँ पे काफी क्रिकेट खेला है, तो वो एक चीज उनके साथ ये रहेगी, वो मैदान को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो होपफुली वहाँ पे अच्छा खेलेंगे आज और ये काफी एक्साइटिंग मैच होगा. Definitely काफी exciting होने वाला है. Pratik, I would like to know your thoughts on this as well, but I want to know one more thing. Since it's just Thursday and we are getting into one double header, and अभी तक IPL में हमने किसी other than weekends पे हमने double headers देखा नहीं. I want to know this reason because double header means कि want, like BCCI want people to watch the match. But if you put on one match at 3:30 on Thursdays, are you really looking forward to get to people to see this match and be like completely in it? Will you think that this is a good option to go with? Your voice is still not coming, I think, yeah. It's mute, I guess. It's mute. It's on mute. Try and joining again, Pratik. Till then, I'll carry on with Hitesh. Hitesh, what do you think about this? Since Thursday को एक डबल हेडर रखा गया है और डेफिनेटली इस मोमेंट पे ये चूंकि डबल हेडर्स की आप मैचेस रखने का मतलब यही होता है कि लोग इन मैचेस को देखना चाहें और एंजॉय करें. बट थर्सडे के दिन डबल हेडर, वो भी इतना बड़ा मुकाबला आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स को रखना 3:30 पर, क्या एक सही डिसीजन है बीसीसीआई का? बीसीसीआई का डिसीजन उन्होंने तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, लेकिन आई थिंक सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी थर्सडे को 2 मुकाबले हैं, शायद आने वाले 1 या 2 थर्सडे ऐसे भी होंगे. एक मुझे याद है 3 मई को ऐसा मुकाबला होगा, मतलब कि थर्सडे है शायद, और उस दिन भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे. तो इसके पीछे की वजह क्या है वो तो एग्जैक्टली बता पाना काफी मुश्किल होगा कि बीसीसीआई ने क्या सोच कर रखा है. हो सकता है जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ कि टूर्नामेंट काफी लंबा चलने वाला है. ऑलमोस्ट ये 70 डेज का टूर्नामेंट हो जाएगा, 75 डेज का, जब तक ये एंड होगा. तो अगर ये डबल हेडर्स को अगर मतलब बढ़ाएंगे नहीं तो ये टूर्नामेंट और भी लंबा हो सकता था. तो शायद उस चीजों को कम करने के लिए बीच में ऐसे थर्सडे को या फिर ऑफ डेज के दिन मुकाबला रखा गया है, ताकि मतलब ये लोग एंजॉय भी कर सकें और ये टूर्नामेंट उतना लंबा ना चले, क्योंकि खिलाड़ियों का भी ध्यान रखना होता है, उनकी फिटनेस का, उनकी हेल्थ का, उनके साथ काफी इश्यूज होते हैं, तो वो सब भी देखना होता है. तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद बीसीसीआई ने फैसला किया होगा कि मतलब कि कुछ डबल हेडर्स को भी मुकाबला, मतलब कुछ ऑफ डेज के दिन भी ये मुकाबला रखा जाए.
राइट, सो ऑफ डेज पे मुकाबला रखने की शायद गुंजाइश इसीलिए होगी क्योंकि चाह रहे होंगे कि प्लेयर्स को भी बराबर से रेस्ट मिले। प्रतीक, am I audible? Are you audible to us? Will you just give us a voice test right now? I hope I am. Yes, you are. Is it Thank you. audible? I was just asking Okay. this question like for double headers, basically, precisely. What do you think? What is the reason behind this? Why BCCI has put down one double header on Thursday, which is a 3:30 match, and we are not like we cannot expect people to come up in good numbers and watch this match. But this is something which is like we want to know why they have been given this double header to Thursdays. Yeah, I think it's pretty obvious that it won't attract as much viewership or attendance in stadium as it would on a weekend. But having said that, I think as the IPL committee and BCCI, they quite haven't found a resolution to making this huge tournament squeezed into 2 months window. I think there are more teams than there were before until 2 years ago, and and also the fact that home and away format is back, so there could be logistical issues, and all these factors will come into play. At the end of the day, I think the only reason for this is that I think they are just trying to squeeze all the matches within the given time frame. Having said that, will that affect the viewership, the traffic, the attendance at the stadium, and all these sort of numbers? Obviously, it would. I think, uh, having it at 3 p.m. and not a lot of people are going to be free to watch the match. But then again, we Right. are going to see some star players like Shikhar Dhawan and Virat Kohli play today in the afternoon. So there are always going to be at least a major portion of people who would want to turn up and watch the game, although it wouldn't be as much as we would have on a weekend. Right, right. Even like when I was going through Twitter links, so I get to know that a lot of people were ready to sell off their tickets because if they have got this double header tickets and they want people to take up because it's Thursday and they couldn't go to watch the match due to some circumstances. So I thought maybe it's not a good thing for the BCCI, for the fans basically, that they cannot just simply go and watch the match because it's an odd day for them. But let's take a look at the head-to-head of this particular match because Punjab Kings and Royal Challengers Bangalore have played a lot of matches together. They have played 30 matches in which Punjab Kings has won 17 and RCB has won 13, which is quite a good number for Punjab Kings today because we know what kind of a team is RCB and what kind of a team is PBKS. And definitely today they have got the upper hand because of this particular number. If we talk about the pitch report, so before the toss happens, the pitch is in IS Bindra Cricket Stadium assists pacers better than spinners. Pace have picked wickets in better frequency than spinners. And Hitesh, definitely that is a good news for Kagiso Rabada because number one, he has good numbers against RCB, and today the pitch is also going to support him for so many reasons. So how do you see this? Like Kagiso Rabada के लिए कोई number है which you can pick कि how lethal is he going to be today? कगिसो रबाडा के साथ साथ सैम करन के लिए भी काफी अच्छा होगा क्योंकि वो भी शुरुआत में गेंद को स्विंग करवा सकते हैं। तो रबाडा और करन दोनों इस पिच पे काफी घातक साबित हो सकते हैं क्योंकि बैटर्स फ्रेंडली भी है, लेकिन हाँ शुरुआत में नए गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को काफी मूवमेंट मिलती है यहाँ पे। तो वो चीजें देखना होगा, लेकिन इसके साथ ये भी है कि दिन का मुकाबला है, तो दिन के मुकाबले में धूप होगी, पिचेस ड्राई होंगी, तो वो चीज भी एक फैक्टर भी कैप्टन के माइंड में होगा कि वहां पे कैसे टीम्स का सिलेक्शन करना है, स्पिनर्स को किस तरीके से गेम में लाना है। तो कगिसो रबाडा और सैम करन के साथ साथ बाकी गेंदबाजों का भी रोल काफी अहम होने वाला है इस मैच में। राइट, और इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया अपडेट कहूँ या क्या कहूँ इसको, बट विराट कोहली इज गोइंग टू लीड आरसीबी टुडे बिकॉज Faf is injured a little bit in the last match. That's why they're not taking risk for him. So Virat Kohli is going to lead RCB, and Sam Curran is doing it for today because again Shikhar Dhawan is not available for this match. So Sam Curran versus Virat Kohli, both the vice captains of both the teams, they are going to lead their teams, and I'm definitely very sure. Like जो Delhi fans बहुत खुश थे कि उनके दो लड़के आज का मैच खेलेंगे, दो local boys, but Shikhar Dhawan is not available. But definitely that is a good news for Virat Kohli fans because RCB के साथ जो emotions हैं, being Virat Kohli as captain of their team, like previously he as captain and afterwards Faf du Plessis took up the job. Pratik, how excited are you for today? Like Virat Kohli going to lead RCB for after so many matches, because we know he is not the captain in Indian team, he's not the captain in RCB, and we really missed him in that particular position. Absolutely. I'm very excited to see Virat Kohli leading the side again. He's someone who wears his heart under his sleeve. He's just
very animated even when he's not captain. So that is a kind of leadership we don't see that often. I mean, everybody is just too calm. All the captains in the tournament these days, or anywhere for that matter, at the highest level. So we need this kind of personality leading the team to lift the team, to lead from the front and show that the team needs to fight for every run, every second, from start to finish. This is something we missed. I think all of us missed, the Indian cricket fans. Having said that, it is actually quite interesting because in RCB's previous match, when Faf du Plessis had to leave the field early because of injury, for that short while, the one who had taken the captaincy was Glenn Maxwell, not Virat Kohli. So I'm clearly a little surprised. I don't quite understand the situation here. So I mean, it is quite obvious that RCB don't really have the vice captain situation sorted. But yeah, nevertheless, it is really good to see Virat Kohli lead the side again, and I'm thoroughly excited. Right. And right now, I've been bombarded with a lot of news updates to tell you all. Like, number one, Virat Kohli is leading RCB. Number two, Shikhar Dhawan is not leading Punjab, but Sam Curran is doing it. And Livingstone is back in Punjab. And Ellis is also back because Kagiso Rabada is not playing. And we were talking about him. He has got good numbers against RCB. But then Faf can be a potential impact player for RCB today, for today's game of RCB. But he definitely is not going to field in today's game. हितेश, इतनी सारी न्यूज, अ लॉट ऑफ चेंजेस, सारे नंबर्स पलट के रख दिए, सारे सीक्वेंस पलट कर रख दिए. अब आज के इस मुकाबले में मुझे लगता है कि आई एम नॉट वेरी श्योर who's gonna win it, but according to you, which team has upper hand now? Like having Virat Kohli captaining them, Sam Curran captaining them, Livingstone is back, Ellis is back, no Kagiso Rabada, Faf can be a impact player. So which team are you rooting for today then? बिल्कुल ही जो अपना मतलब कॉम्बिनेशन था, जो उन्होंने से हाँ, जज्बात बिल्कुल पलट गया. जो कॉम्बिनेशन था सब कुछ था, मतलब लियम लिविंगस्टोन का तो पता था कि वो कर खेल सकते हैं. लेकिन शिखर धवन के कोई मतलब कैसे, उनका चोट कैसा है, उनकी इंजरी कैसी है, वो भी मतलब कि वो लगातार 2 मैच मिस कर रहे हैं, जो कि बड़ी बात है क्योंकि वो फिटनेस के मामले में वो काफी खुद को लेकर सीरियस रहते हैं. वो मतलब फिटनेस के साथ इतना मतलब कि बहुत ज्यादा उनका वो रहता है. लेकिन वही है कि उसके अलावा नाथन एलिस जो शुरुआती मैचों में 2 मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो ऐसा लग रहा था कि रबाडा और एलिस में से, इन दोनों में से मतलब हर मैच में स्विच देखने को मिल सकता है कि कभी रबाडा या कभी नाथन एलिस. नाथन एलिस इज ए गुड ऑप्शन क्योंकि उन्होंने शुरुआती 2 मैचों में बहुत अच्छा किया था. एक में 4 विकेट हॉल भी लिया था, तो उनका तो सही है. लियम लिविंगस्टोन जिन जिन मतलब काफी दिन से उनसे मतलब कि उनकी वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ये भी है कि वो काफी समय बाद आज कोई इंटरनेशनल मैच या कोई कॉम्पिटिटिव मैच खेलेंगे. तो ये देखना होगा कि किसी भी प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होता डायरेक्टली मतलब चोट के बाद वापसी करके अपना नेचुरल गेम खेलना. तो आज वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, कैसा उनका प्रदर्शन रहता है, परफॉर्मेंस रहता है, वो देखना काफी होगा. लेकिन हाँ, उनके आने से डेफिनेटली पंजाब किंग्स की बैटिंग ऑर्डर मजबूत होगी. लेकिन वही है कि फिर उनके ओपनिंग में वो कमजोरी दिखती है क्योंकि फिर वो अथर्व तायडे या फिर प्रभसिमरन सिंह लगातार 3 मुकाबले हैं और तीनों मुकाबले में पहले ओवर में पंजाब का पहला विकेट गिरा है, वो भी बिना बिना कोई स्कोर बनाए हुए. तो एक ओपनिंग उनकी कमजोरी दिखती है, लेकिन लियम लिविंगस्टोन के आने से वो चीज शायद मिडिल ऑर्डर में मजबूती मिलेगी. अगर शिखर धवन होते तो डेफिनेटली मैं पंजाब किंग्स को फेवरेट्स मानता, लेकिन अभी मुझे लगता है 50-50 दोनों टीमों के पास अपने प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब कि स्ट्रेंथ और वो भी है. तो मैं अभी 50-50 पे हूँ दोनों के साथ. Right. Even I am on 50-50 right now because I don't know what is going to happen. Pratik, which side are you rooting for? Like, I know you're a fan of RCB, but still, like, if we go by on paper skill set of both the teams right now, the available talent, which team do you think has the upper hand today? It's really hard to say because RCB have won only 2 games as of now in the 5 matches. Punjab Kings, on the other hand, in the last match, even though their key player, arguably the best player of the season, Shikhar Dhawan was missing, they still managed to win comprehensively under leadership of a very young captain who really thrived under captaincy. So one team will come into this fixture with momentum, with confidence, playing at home. Another team will go away from home without much momentum and without their captain as well and top scorer. So I'm going to say
Punjab Kings will back themselves to win this game. I would say they might be favorites by just a little bit. I would say it would be 55-45 in favor of Punjab Kings. Having said that, we know what kind of strength that RCB has, at least on paper, if not on field. So potentially they can do a lot better than they have performed so far. Historically, RCB are not fastest starters of a season's campaign. But over the last 3 seasons, they have qualified for playoffs each season. So I think after 5 matches, this could be the time RCB might find their playing combination right. They might understand who can do what. The roles would be much clearer now. So I'm going to say RCB are now in a position where they know what to do and they would know how to win. राइट और इसी के साथ आज के मैच का प्लेयर टू वॉच आउट भी देख लेते हैं. दो वी नो कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट एटलीस्ट वी हैव वन जो कि हमेशा प्लेयर टू वॉच आउट होते ही हैं जब भी आरसीबी का मैच होता है एटलीस्ट, एंड दैट इज विराट कोहली इन टुडेस मैच फॉर आरसीबी. ही हैज प्लेड 228 मैचेस एंड ही हैज स्कोर्ड 6844 रन्स. ही हैज 36.59 एवरेज एंड 47 50s and 5 hundreds, which gives us another a good fact about him today. Like आज के orange cap list में he is on number 6th or 7th, I guess. And right now इनके ऊपर अगर आज के मैच में if we talk, then Faf du Plessis and Shikhar Dhawan, and Faf is not playing at least. Like अभी तक तो यही update है, and Shikhar Dhawan is definitely out of it. And to reach the orange caps, Virat Kohli need to score just 29 or 30 runs odd, and afterwards he'll be owning orange cap maybe. So there's a good chance for Virat Kohli to get on this orange cap after so many matches. Hitesh, what do you want to say about this? ऑरेंज कैप तो खैर नहीं, विराट कोहली शायद वो नहीं सोच रहे होंगे क्योंकि आज फाफ नहीं है तो उनपे मतलब उनपे जिम्मेदारी जो काफी अधिक होगी, क्योंकि एक तरफ फाफ नहीं होंगे, कैप्टनसी भी है, टीम पिछला मैच हार के आ रही है, तो उनका शायद सेट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड अलग होगा. उनके लिए मैच इसलिए काफी जरूरी होगा क्योंकि आरसीबी को अब मतलब कि जीत चाहिए, क्योंकि पिछला मैच वो इतने क्लोज आके हारे थे, क्योंकि वहां पे मैक्सवेल और फाफ एक टाइम पे सेट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आराम से उस मैच को जीत जाएगी, हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन वहां पे फिर वो दोनों आउट हुए, फिर उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, फिर उन्हें मतलब कि बड़ा हार नहीं, छोटी सी हार का सामना करना पड़ा था. तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आरसीबी आज मतलब कि विराट की कप्तानी में वापस से जीत हासिल करना चाहेगी. डेफिनेटली एज अ बैट्समैन उनके लिए काफी बड़ा मैच होगा, क्योंकि वो हर कोई चाहता है कि वो रन बनाए, सामने से टीम को लीड करें, कप्तानी मतलब कि सामने से टीम को लीड करें, तो वो चीजें काफी अहम हो जाती है किसी मैच में, खासकर विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए. तो बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान दोनों ही तरीके से देखा जाए तो ये मैच विराट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. राइट और जिस तरह की अभी अपडेट्स हमें मिली हैं उसके बाद हमारी प्लेइंग 11 रेडी है दोनों ही टीम्स की. तो एक बार देख लेते हैं कि कैसी दिखाई दे रही है पंजाब किंग्स की ये आउटफिट. अथर्व तायरे एंड मैथ्यू शॉ विल स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, एंड आफ्टरवर्ड्स हरप्रीत सिंह, लैम लिविंगस्टन, सैम करन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, हरप्रीत ब्रार, नेथन एलिस, राहुल चहर एंड अर्शदीप सिंह. तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी पंजाब की आउटफिट. वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो बैंगलोर की टीम किस तरह से दिखाई पड़ेगी वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि ये 11 आफ्टर ऑल किस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई देने वाला है. सो ये है हमारी टीम. विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी, महिपाल लॉम्ब्रोर, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा, सुयश प्रभुदेसाई, हर्षल पटेल, वेन पानेल और मोहम्मद सिराज. तो ये है प्लेइंग 11 आरसीबी और पंजाब किंग्स की. अब एक बार देख लेते हैं सोशल ट्रैकर में लोग किस तरह की डिस्कशंस कर रहे हैं अबाउट दिस मैच, बिकॉज डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग. और ये देखिए फैफ के ऊपर स्टार्ट, बिकॉज हमें पता था कि फैफ डु प्लेसी अगर खेलते हैं तो किस तरह से खेलते हैं, बट आज के मुकाबले में अनफॉर्चुनेटली अभी तक अवेलेबल नहीं है. अगर इम्पैक्ट प्लेयर होंगे तो होंगे, बट ये कुछ नंबर्स हैं. और ये शिखर धवन दूसरे जो कि अगेन इन्होंने पिछले मैच में 99 रन्स लगाए थे, और ये इन्होंने एक स्टैट भी यहाँ पर शेयर किया है, पास्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ की आरसीबी प्लेयर्स वर्सेस पंजाब, जहां पर हम देख सकते हैं फैफ काफी इनक्रेडिबल रिकॉर्ड रहा उनका पंजाब के अगेंस्ट. उन्होंने 495 रन स्कोर किए हैं इन 4 सीजन. हर्षल, सिराज एंड हसरंगा हैव आल्सो परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर आरसीबी कि उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. प्रतीक, इफ यू टॉक अबाउट द आरसीबी बॉलिंग लाइनअप, डेफिनेटली सो यहाँ पर हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें अदर देन मोहम्मद सिराज ज्यादा प्लेयर्स अभी तक इतना परफॉर्म नहीं कर पाए या उतना
बेसिकली इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द डेथ बॉलिंग स्पेशली आरसीबी की, हमने लास्ट मैच में भी देखा, इट वाज नॉट दैट गुड. इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था सीएसके ने कि आरसीबी के बैटर्स के लिए डिफिकल्टी रही. तो उनकी बैटिंग ओवरकम कर जाती है कई बार ऐसे रन्स को, बट इट शुड नॉट बी हैपनिंग इन सच केस, बिकॉज सिराज है एक बहुत ही अच्छे स्टार्टर हैं और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं आरसीबी के लिए. बट बाकी बॉलर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. इवन विजय विश्वक जिन्होंने लास्ट मैच में उन्होंने आरसीबी के हिस्ट्री का सेकंड वर्स्ट ओवर फेंका था, which was around like 60 plus runs he has given, and then 15 की economy थी. So what RCB should really do for their bowling, and especially at the death overs? RCB's death bowling concerns, this is something that has persisted over the last few years. I think it has been the biggest problem ever since inception of IPL. Speaking of the death bowling, I think we can't exclude Mohammad Siraj either, because if you look closely, if you look at his numbers, he hasn't been that great at the death either. It's just something that has persisted with everybody. And talking about Siraj, on his day, he's capable of bowling perfectly at any situation of the game, at any position. So he's undoubtedly the pace spearhead. And talking about others, Wayne Parnell, he has performed in glimpses as well. He had a great start to the IPL. As soon as he came to the team, he took some key wickets, had a great performance. And then Vijay Kumar Vaishak, uh, he started off well. He had a great debut, and it was only in his second game when he was taken for runs. And others, mainly the fast bowlers, Akash Deep might, I'm not too sure who the impact player is going to be in the second innings, but Akash Deep is another player who started off in this campaign and was there in the last season as well. He's someone who is capable of taking the responsibility and containing the batters at the back end. He has got the skill set. He has got good variations, good bouncer, decent pace, can hit the deck hard. Um, the problem is consistency. One day they might restrict opposition for, let's say, 120. They might knock them out for 120 when they're defending a target of 210, let's say. And another day when they are bowling first, they might just concede. They might just lead 200 runs, and that might compensate for the performance that they put up earlier. So all in all, it's not the case that they never perform well at the death. It's just that when they contain the batters, they contain really well. When they don't contain the batters, they just go for plenty of runs. And in the end, the numbers don't look great for them. Right, or we have got some impact substitutes update as well. Like PPK is going to may use Prab Simran Singh, Mohit Rathi, Shivam Singh, Rishi Dhawan, and Sikandar Raza. And if we go by RCB, that is going to be Vijay Vishyak, David Willey, Karan Sharma, Akashdeep, Anush Rawat. So definitely these are the names. But if we talk about some common players which RCB and PPKs have really shared between them, like if we go by the history, then there is, other than players, we have got one common coach as well. Hitesh, Mike Hesson was with Kings 11 Punjab before, और उन्होंने जिस तरह से प्लेयर्स भी इकट्ठा किए थे पंजाब किंग्स के लिए, तो देखा जाए तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे सैम करन, निकोलस पुरन, डेविड मिलर, इवन आर अश्विन एंड केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, दे हैव प्लेड विद किंग्स 11 पंजाब जस्ट बिकॉज माइक हैसन वाज हियर. तो उन्होंने जिस तरह की पिकिंग की थी, और उसके बाद में नाउ ही इज विद आरसीबी. अभी ऐसा जरूर हो रहा है कि उन्होंने प्लेयर्स अच्छे चुने थे, बट किंग्स 11 पंजाब उनके जब जो टाइमलाइन था जब माइक हैसन उनके साथ थे, दे कुडंट प्ले प्लेऑफ्स. बट आरसीबी के साथ जब से माइक हैसन है, उन्होंने लास्ट 3 सीजन्स में लगातार क्वालिफाई किया है प्लेऑफ्स में. सो डू यू सी दैट कि माइक हैसन को लूज आउट करना बस पंजाब किंग्स की एक छोटा सा एक कौन बोलेंगे उनके सीजन की जर्नी में, या फिर इट इज अ गुड डिसीजन टू बी टेकन ऑफ? कोच यानी कि सब कोच या फिर कोचिंग स्टाफ जो देखे तो उसका रोल तो काफी अहम होता ही है, खासकर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में. जब वो पंजाब के साथ थे तो उनके पास काफी अच्छे प्लेयर्स थे, जैसा आपने कहा केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, ये लोग काफी अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन वो लोग नहीं खेल, उस सीजन भी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे. लास्ट पीपीकेस ने क्वालिफाई किया था 2014 में. तो वो लेकिन ऐसा भी है कि आप एक दो प्लेयर्स के बलबूते पे या फिर ऐसे ऐसे करके आप डायरेक्टली प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकते. आपको जितना आपको एक किसी बैटर से चाहिए होता है, उतना ही आपको कंट्रीब्यूशन बॉलिंग से चाहिए होता है, फील्डिंग से चाहिए होता है. तो तीनों का रोल काफी अहम, तीनों डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है और काफी अहम है.
माइक हेसन जब से आरसीबी में आए हैं तो उनके पास वही ग्लेन मैक्सवेल उनके साथ शायद वहां भी थे, पंजाब किंग्स के पास भी थे। वहां पे उनका प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, अंत में पंजाब किंग्स को रिलीज करना पड़ा था। बाकी जब वो इनके पास आए तो एक अलग डिफरेंट टाइप के ग्लेन मैक्सवेल दिख रहे हैं। तो सिर्फ कोच का नहीं, टीम इन्वायरमेंट का भी, बाकी चीजों का भी प्रभाव मतलब इफेक्ट पड़ता है खिलाड़ियों पे। तो शायद बैंगलोर के साथ ये चीजें नहीं होंगी। बैंगलोर का दोनों दोनों टीम्स काफी अलग हैं। तो माइक हेसन की वजह से बैंगलोर का अच्छा होना या पंजाब किंग्स का खराब होना, मैं उतना बड़ा वो नहीं मानूंगा कि उतना बड़ा इफेक्ट होगा। लेकिन हाँ, एक कोच का काफी अहम रोल होता है खिलाड़ियों के साथ, उनको कैसे मैनेज करना है। किसी का ऑफ टाइम चल रहा है, कोई अगर फॉर्म में नहीं है तो उनसे कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, वो चीजें काफी अहम हो जाती है। तो हाँ, मतलब ये वहां पे माइक हेसन का रोल अहम है। डेफिनेटली। और एक और चीज है जो कि आरसीबी को स्टैंड आउट करती है, एंड दैट इज लाइक दे आर द सेफेस्ट कैचिंग साइड इन द लीग सो फार। प्रतीक, अगर बात करें बैटिंग की, वी नो आरसीबी का नाम काफी फेमस है, लाइक बिकॉज ऑफ द टॉप 3 दे हैव, बट राइट नाउ उनकी फील्डिंग जो स्किल सेट है उसके बारे में भी बातचीत लगातार हो रही है कि दे आर द सेफेस्ट कैचिंग साइड इन द लीग। और उन्होंने अभी तक सिर्फ कैचेस ड्रॉप किए आउट ऑफ 28 कैचिंग चांसेस, व्हिच इज अ ग्रेट नंबर टू गो बाय। एंड डेफिनेटली अगर कोई टीम इतनी अच्छी फील्डिंग करती है तो उसके बाद में उनका मैच जीतने के चांसेस ऑटोमेटिकली 30% से एक्सीड कर जाते हैं, बिकॉज यू नो आपने अपनी बैटिंग में तो कवरेज अच्छी करी है, यू आर गेटिंग गुड स्कोर्स, यू आर चेजिंग गुड, बट देन व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग साइड यू आर एटलीस्ट फील्डिंग गुड। तो वहां पर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट रह जाता है, व्हिच इज द बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो अगर आरसीबी तीनों को नेल कर देती है तो इस साल वाकई इस साल कप नाम दे। Talking about fielding, I didn't really know about the stat. I'm actually pretty shocked. I think this is one department that we don't really look too much into in terms of numbers. I think that only goes to show that all these names that you have, Faf du Plessis, Virat Kohli, Glenn Maxwell, these are supreme athletes. They are very fit and very agile, and they will always put their body in the firing line and save as many runs as they possibly can. And then, as a matter of fact, I would have thought we would be one of the worst fielding sides in terms of catching because, honestly, Dinesh Karthik, he's been having a bit of a rough season behind the stumps. So I think that is one area they would really emphasize on. Speaking of Dinesh Karthik, of course, he's not getting any younger, but it's not as if to say that it's because of lack of fitness or anything like that. He looks to be in shape. All is well there. So I think that is something they would put emphasis on in training and in fielding sessions. And yeah, I mean, if I think about it now, even someone like Mohammad Siraj, who is not known for his fielding, we have seen a little more push in the outfield from the fast bowlers as well. I think that's just what modern cricket is. Even if you're a fast bowler, a spinner, you're not really known to be athletic. There will be so much emphasis given on fielding and every department for that matter. Uh, yeah, I mean, one of the former Indian coaches, Anup Sridhar, in his sessions, he has told that prior to the matches or with the team, they have come to this stage. They are professional cricketers. There is no teaching of how to catch. You don't teach techniques, but what they do teach is how to prepare them mentally, how to tell them where what the dimensions of a particular ground is, how to be mentally prepared for certain kind of catches or balls that is coming at you, and how to cope with certain kind of balls if you're standing at a particular place in a boundary. So with so much technology available, they would put so much emphasis on every subtleties, every details, and I think RCB have got it spot on in that department for sure. या एंड डेफिनेटली आज के मैच में अगर अच्छी फील्डिंग देखने को मिलेगी तो वो भी फैंस के लिए एंटरटेनिंग होगा, बिकॉज हम लोग वाकई इस तरफ कभी फोकस नहीं करते कि किस टीम ने कैसी फील्डिंग करी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आरसीबी डेफिनेटली अगर अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट भी नेल करती है तो हो सकता है कि इस सीजन वो जो इंतजार है आरसीबी के फैंस का शायद वो पूरा हो जाए। बट थैंक यू सो मच हितेश एंड प्रतीक जॉइनिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। और हम लोग वापस से जुड़ेंगे इस मुकाबले के बाद जहाँ पे एक दूसरा मुकाबला भी हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिक ट्रैकर और इंडिया शो।